गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गुरुजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Rabindranath Tagore said, "Light, my light, the world feeling light, the eye-kissing light, the heart-sweetening light. The light dances, my darling, at the center of my light. The light strikes, my darling, the chords of my love. The sky opens, the wind runs wild, laughter passes over the earth." We shall now have the lighting of the lamp. I request the dignitaries to please come up the stage to do the lighting of the lamp. We shall all stand and participate in the lighting of the lamp while the music teachers of Father Agnel Ashram, Agnel High School, Verna will sing a bhajan.
Christ. We shall now listen to a reading from the scriptures. Now the body is not made up of one part, but of many. If the foot says, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason cease to be part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has arranged the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. As it is, there are many parts, but one body. Almighty God, You have gifted us to be the children of beautiful motherland India, which is a kaleidoscope of various regions, languages, cultures, religions, etc. Our country is like a body made up of different parts, and where every part is important and has a role to play. We have gifted us Indians to be people who can live in peace, harmony, love and fraternity. What we have inherited from our ancestors, we earnestly desire and wish to pass it on to the future generations, especially our youth, who are looking forward for a nation built on democratic principles. At this moment, we are gathered here for a collective action for dialogue and social harmony. Enlighten our hearts and minds so that the resource persons may present before us a path which will lead and help every citizen to be a responsible son and daughter of our beloved India. Where the mind is without fear, the head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way in the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Thank you. Thank you, Father, for the beautiful prayer service. I would like to inform our esteemed audience that the prayer dance was performed by Ms. Shruti Sunil, an ex-student of her father Agnel High School and High Secondary. She is now pursuing higher studies at Goa College of Architecture. The bhajan was sung by the music teachers of Father Agnel Multipurpose High School. We will now welcome our dignitaries to the dais. I request Reverend Bishop Theodore Mascarenhas, Secretary General, CBCI, to kindly escort His Grace, Most Reverend Philip Neri Ferrao, Archbishop of Goa and Daman, to the dais.
request Reverend Father Sebastian Mascarenhas, Superior General of Society of Pilar, to escort Goswami Sushil Ji Maharaj, President, Bharatiya Sarva Dharma Sansad, to the dais. Can we have a loud... I request Reverend Father Alarico Carvalho, Regional Superior, Agnel Region of the Society of Pilar, to escort Dr. Imam Umair Ahmed Ilyasi, President, Imam Council of India, to the dais. I request Father Jervis de Souza, Deputy Secretary General, CBCI, to escort Sardar Paramjit Singh Chando, Chairman, Bangla Sahib Gurudwara, to the dais. I request Father Stephen Fernandez, Secretary of CBCI Office for Justice, Peace and Development, to escort Acharya Vivek Muni, President, International Mahavir Jain Mission, to the dais. I request Father Alesh Menezes, Rector of the Patriarchal Seminary of Rashol, Goa, to escort Reverend Bhikkhu Sanghasena, Founder, Mahabodhi International Meditation Center, Ladakh. We will now have the formal welcome address by Reverend Father Sebastian Mascarenhas, Superior General of the Society of Pilar. Father Sebastian Mascarenhas comes from the beautiful scenic village of Kamurli, the Salsette in South Goa. After his early schooling, he joined the Pilar Seminary and was ordained a priest in the year 1984. He has spent many years in education, religious and development work in Gujarat, Nagar Haveli, Goa and Maharashtra. He did his higher studies in Germany, where he completed his doctorate. After serving many years in various administrative posts, he is now the Superior General of the Society of Pilar. Father?
kindly address the gallery. Can we have a round of applause, please? His Grace Archbishop Philip Neri Ferrão, Archbishop of Goa and Daman, Right Reverend Theodore Mascarenhas, Secretary General of the Catholic Bishop Conference of India, respected and dear Sushil Goswami Maharaj Ji, President Bharatiya Seva Dharma Sansad, respected and dear Imam Umair Ahmed Ilyasi, President Imam Council of India, respected and dear Paramjit Singh Chandok, Chairman Bangla Sahib Gurdwara, respected and dear Vivek Muni, President International Mahavir Jain Mission, respected and dear Bhikkhu Sanghasena, founder Mahabodhi International Meditation Center, Reverend Father Alarico Carvalho, Regional Superior of the Agmel region of the Society of Pilar, and my dear brothers and sisters. Excuse my voice. I am honored to stand on the dais at the beginning of the interaction on collective action for dialogue and social harmony on the occasion of the establishment of the Agnel Ashram. On behalf of the Catholic Bishops' Conference of India, the Church of Goa, and the Society of Pilar, it is my honor to welcome the honorable speakers and each one of you to this unique and essential initiative. The composition of the panel for dialogue today reflects how much religion plays a seminal role in the lives of the peoples of India. The great theologian Karl Rahner said, "You cannot talk about God without talking about man. And you cannot talk about man without talking about God." We are so interrelated. I like to think that the basis of all dialogue is the classical creation story from the first book of the Bible, Genesis, where God saw that all that was made by Him was good. And finally, He made the best of them all. In His own image and likeness, you and me, humans, women and men. Dialogue is to enable us, men and women, to realize our goodness as made in the likeness of God, and thus enable the goodness inherent in the whole universe to bloom and flourish. Jesus lived the two fundamental principles of dialogue. The Bible says He emptied Himself. He lived for others, living for good and dying for evil. Dialogue is about emptying oneself to make place for the other. May these two principles set the tone of dialogue today and in every nook and corner of India, where people believe in God who created everything good. And may this dialogue today assert this and enable us to live this way. In this spirit, may I end with a quote of Rabindranath Tagore. This is the first song in the Gitanjali. Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it with ever fresh life. This little flute of a reed thou hast carried over hills and dales, and hast breathed through it melodies eternally new. At the immortal touch of thy hands, my little heart loses its limits of joy and gives birth to utterance ineffable. Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass, and still thou pourest, and still thou pourest, and still there is room to fill. Welcome one and all. Jai Hind, Shanti. Thank you, Father. It is indeed very important for all of us to remember that God is
and has to be the center of our lives. We will now formally begin the discussion on the topic for today, collective action for dialogue and social harmony. The panel discussion will be moderated by Reverend Bishop Theodore Mascarenhas, Secretary General, CBCI. Bishop Theodore Mascarenhas is from Goa and a member of the Society of Pilar. He was ordained a priest on 24th of April 1988. After being ordained a priest, he served in Punjab in North India till 1993, both in religious duties and as vice president and principal of the schools run by the Society of Pilar in Punjab. From 1994 to 2001, Bishop Theodore studied in Rome and completed his doctorate at the Pontifical Biblical Institute. He then worked as an official at the Pontifical Council for Culture in Rome and was also a professor in the universities in Rome. He was ordained bishop on 30th August 2014, and after serving as auxiliary bishop of Ranchi, he is now the General Secretary of the Catholic Bishops' Conference of India, that is CBCI. I now formally hand over the proceedings to Reverend Bishop Theodore Mascarenhas. Most Reverend Archbishop Philip Neri, our Archbishop of Goa and our chief guest for today's function, most respected dignitaries on the dais here, my dear brothers and sisters, my dear friends. Peace begins with a smile, said Mother Teresa, and I like to begin with a smile. When India got its independence, two countries were born. One country, Pakistan, decided that it would be founded on a certain religion. And on the basis of religion, Pakistan was founded. India, the founding fathers and the freedom fighters decided that India would be a secular, multi-religious, pluricultural society. This goes back to thousands of years of living together in peace and social harmony. It was not an accidental decision. It was a choice that the people of India made, that we would live together as brothers and sisters, no matter to what religion, to what culture, to what region we belonged, or what language we spoke. And the years of progress that we have seen in our country is mostly because we were able to live together as one people. But there's always also been a certain tendency, as in every people in the world, that we look at ourselves separate from others, that we look at ourselves different from others. And that is why that unity in diversity is the aim and model on which this country was built. But when the differences become intolerable, or we make them look intolerable, then not simply individual futures are at stake, the future of the country itself is at stake.
These spiritual leaders who have gathered here, we had the chance to meet them in Delhi earlier, one-to-one, together. All of them have a certain vision for India. Yes, we are one nation, but we are not one nation based on one religion. Yes, we have many cultures, and these cultures can live together. This country has a future, and that future lies in the coexistence of its people in love, peace, and harmony. In recent days, we are getting a little worried. Since the beginning of this year, 270 communal incidents of violence are reported only from Bihar. There is tension in some part of West Bengal. There are incidents taking place in Rajasthan. Our own Christian institutions have been facing attacks. Of late, in the Easter week itself, 3 of our churches were vandalized in Rourkela, Orissa. All these are not the handiwork or the work of the majority of our people. The worry is that there are people within society who perhaps don't belong to any stream at all, but who want to inject poison of hatred and division in our society. And as Goswami Sushil Maharaj was telling me, we light-thinking people must come together. For us Christians, this is a very important week. After Easter, again and again, Jesus comes to his apostles, disciples and says, "Peace be with you." And that is the peace the Christian community, along with the spiritual leaders, wants to take back. We decided we could start with Goa, and we want to start a series of these meetings with the general public to create a positive energy that will overcome the powers of hatred and division. I welcome each of these leaders. I won't mention their name because I'll introduce each of them. And as we go ahead, we shall listen to them. They come from different faiths, but with the same heart, with the same spirit, with the same. I'd first like to introduce Sri Vivek Muni, who is our Jain representative. He was born on 12 December 1974 at Tijora, Jhansi, UP, India, in a Brahmin family. On 13 March 1993, he took Diksha under world-renowned His Holiness Acharya Sushil Kumar Ji Maharaj and became a Jain monk. He is directing religious, spiritual, and other activities of Vishwa Ahimsa Sangh and other institutions founded by His Holiness. He has been one of those going around propagating communal harmony. I now invite him to address us and to give us what he thinks about the topic we have chosen, collective action for dialogue and social harmony. Youth looking forward.
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम आदरणीय चीफ गेस्ट, और मंच पर विराजमान फादर और राष्ट्रीय सर्वधर्म संसद के संयोजक परम श्रद्धेय गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब, चीफ इमाम उमर अहमद इलायची जी, परम आदरणीय परमजीत सिंह चंडोक, भिक्खु संघ सेना जी, उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर विषय रखा है जो आज पूरे राष्ट्र की और विश्व की जरूरत है। कलेक्टिव एक्शन फॉर डायलॉग एंड सोशल हार्मनी। आज पूरे विश्व को इसकी जरूरत। जैसे हम पूरे विश्व में देखते हैं, बहुत विकट समस्याएं कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं राष्ट्र के नाम पर खड़ी होती हैं और पूरे सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को प्रदूषित और हिंसाग्रस्त बना देती। लेकिन धर्म का जो संदेश है, धर्म का जो मैसेज है, वो दुनिया के जितने भी धर्म हैं सभी हमें अहिंसा की बात करते हैं, सभी प्रेम की बात करते हैं, सभी भाईचारे की बात करते हैं और सभी सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। और भारत की तो ये विशेषता है, विविधता में एकता भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति का प्राण है। उसके बिना भारत देश चल ही नहीं सकता। अगर देखें तो भगवान राम की मर्यादा, भगवान महावीर का त्याग, भगवान बुद्ध की करुणा, यीशु का प्रेम, हजरत मोहम्मद की भाईचारे की भावना, सिख धर्म का सेवा का भाव, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और हमारी इस राष्ट्र की महानता के यही मूल और यही उसकी प्राण शक्ति, जिससे ये राष्ट्र अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भूषाओं में, अलग अलग खान पान में बटा हुआ राष्ट्र भी पूरी तरह से संगठित हमें अगर जोड़ता है भाईचारे का संदेश कि हम इस जगत में हैं तो हम भाई भाई की तरह रहें, हम अपने भाईचारे को बढ़ाएं और सुदृढ़ और मजबूत करें। भगवान बुद्ध की करुणा कि कोई अगर परेशान है, दुखी है, पीड़ित है
तो हृदय में करुणा का भाव जागे और उसकी पीड़ा को हरने के लिए, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए हमें यथाशक्ति जो भी हम कर सकते हैं वह हमें उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसके लिए वह सहयोग हमें करना चाहिए। और सिख धर्म की वह उदार भावना, बिना भेदभाव के सभी की सेवा करना, सभी को लंगर प्रसाद चखाना, ये कितनी बड़ी बात है। और राष्ट्रीय सर्वधर्म संसद इन्हीं महापुरुषों की उस भावनाओं को, उनके उन विचारों को, उन सिद्धांतों को और उनके बताए उसी मार्ग पर चल करके पूरे देश में और पूरे विश्व में वह अमन के, शांति के, प्रेम के और सर्वधर्म सद्भाव के संदेश को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि आज पूरे विश्व को जरूरत है। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि विश्व समन्वय अनेकांत पथ, विश्व समन्वय अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपल गान, सर्वोदय का हो प्रतिपल गान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। इस कार्यक्रम की मधुर बेला में, इस कार्यक्रम की मधुर बेला में बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा, बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा। शांत स्वच्छ शीतल हो तन मन, शांत स्वच्छ शीतल हो तन मन, मिटे अंतर जगत और बहिर्जगत का कलमल सारा, मिटे अंतर जगत और बहिर्जगत का कलमल सारा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में इस कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, Sir Vivek Muni, for your beautiful words. Einstein said, peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. As we move on to the next speaker, before that, I'd like to congratulate Agnel region of the Pilar Society for their first house 60 years ago in Bandra, and then the other houses in Verna, Vashi and Goa and Delhi 40 years ago. So we congratulate them. We move ahead. Our next speaker will be Bhikkhu Sangasena. Venerable Bhikkhu Sangasena was born in the Himalayan region of Ladakh, India. So he is the one who comes from the furthest part. At the age of 17, he joined the Indian Army, where he developed a strong sense of personal discipline and responsibility. In 1977, he thought bullets were not good enough. Let me return to spiritual life. Came over with the inner spiritual call and became a committed disciple of the renowned Buddhist scholar and celebrated monk, Venerable Acharya Udarikita Mahatera, the abbot of the Mahabodhi Society, Bangalore. He's here with us. He's joining this group for the first time, and we welcome him and ask him to give us his talk. We have kept about 5 minutes for each speaker, and I ring a small bell to remind them that they should now come. Buddhang saranam gacchami, dhammang saranam gacchami, sanghang saranam gacchami. May all the saints and sages and all the enlightened masters of all religion, all faiths, from all the directions of the universe, may kindly look at all of us and shower their blessings upon all of us for the success
our coming together here. Our chief guest for this auspicious occasion, His Excellency Most Reverend Philip Neri Ferraro, if I'm pronouncing it wrongly, please forgive me. Most Reverend Theodore Masarinhas and Reverend Father Sivastitio Masarinhas, Reverend Father Alarico Harwaho, and our most respected Swami Sushil Goswami Maharaj, the President of Bharatiya Sarva Dharma Sansad, Dr. Imam Ilyasi, the President of all Imam Associations of India and the Chief Imam of India, and our respected Paramjit Singh Chandok, the Chairman, Bangla Sahib Gurudwara Delhi, and our most respected Vivek Muni, President International Mahavir Jain Missions, and all my dear brothers and sisters, in another word, lover of seekers of truth and lover of peace. Very, very good evening to all of you. Before I proceed further, let me bring the warmest greetings to all of you from the coldest plain of Ladakh in the Western Himalaya. It is a great honor and privilege for me to participate in this very important interfaith program conference, that is Collective Actions for Dialogue and Social Harmony. Very much, very timely and very much needed. And youth of India looking forward. I would like to express my deep appreciation for inviting me to be part of these important programs. Thank you so much to have this beautiful, important dialogue in this beautiful hall of this beautiful state, Goa. Goa is one of the most beautiful places, not only in India, in the world. I have not heard any kind of violence, anything in this state, and it is our sincere prayer that this small state of our country remains the peace center, peace and harmony center for the whole world, particularly our own countries. Dear friends, human beings have achieved so much. What human beings have not achieved today? They have climbed and conquered the highest mountain of the world. They have landed on the moon. They have gone into space. They have touched the bottom of the oceans. They have explored the atom. They have invented all kinds of machines to wash our clothes, cook food for us, wash our floor, and so many things. Yet, despite of all this miraculous achievement in the field of science, technology, economy, very sad that the genuine peace and harmony and security, brotherhood yet to be achieved. This is why now this kind of dialogue is a must. Along with our material, technological, economical development, we must come together. We must discuss. We must balance the inner and outer spirituality and materiality, science and religions, and work for the peace and harmony of this our country and the whole world. You know how beautifully this the great thinker, the king, the founder of the Christians, this new sect, what is that? King, yes, getting old now, with that it is forgetting. He beautifully, I have unfortunately not been able to see him or read much, but somewhere I have
seen some lines, and then I keep that in my heart and always share with people whenever I get a chance opportunity like this. He said, human beings have learned to fly like a bird. Human beings have learned to swim like a fish. And human beings are yet to learn how to walk like brothers and sisters on this Mother Earth. Yes, that is very true. And dear friends, our country, India, this great country, this beautiful country has given birth to so many countless saints and sages like Buddha, Mahavira, Ram, Krishna, and Gandhi, so many, and they have sent a great message to the whole world, message of peace and harmony. And today our country, one side making so much progress, unthinkable. On the other side, we keep on hearing all kinds of, conflicts, confusions between different communities, different religions. This is a matter of great concern for us. This is very sad for us. We must all come together and make this country really a role model for a peaceful coexistence. Here, from the beginning, have a place to live, for all different faiths, different religions. Have a place to live and has been living together like we are here today. We are great masters from all faiths are here, and followers of different religions are here. What a wonderful occasion, what a beautiful occasion. And this, we must work and maintain this at any cost. We must come out from this madness that my country is greater than your country, my God is greater than your God, my God knows than your God, my Guru knows more than your Guru. My Guru knows greater than your Gurus, and my Guru is more handsome than your Gurus. We must come out from this madness. Today, we are living in a different world. In ancient time, perhaps, we are living separately, so without much to do with each other. Today, whole world has become like one village. Whether you are American, Europe, Asian, Buddhist, Muslim, Christians, we're all born in a similar way, growing in a similar way, and we all will die one day. We all share the same planet. We all breathe the same air. We drink the same water. We live under one sun, one moon, one sky. And we all have the same body and mind. Everybody has two eyes, one nose, 2 ears, one mouth, 2 hands, 2 legs, and one small heart somewhere here. Inside the small heart also the same wish, same desire. Desire to avoid all kinds of problems, suffering, fear, worries, and desire to live peacefully, happily, harmoniously. Where is the difference? Where is the difference? The difference is created by ignorance. And this ignorance comes from not understanding our own religion also. There is no difference. Now in today's world, we really need to develop a new vision for the world. A new vision, a global family, includes you, a new vision. That means we must, while practicing and following your own religion and tradition, we must open our hearts to other religion. We must respect all religion, all. All religion should be treated like different flowers. Different flowers are like different flowers. Different religions are like different flowers. And more flowers, more beauty. Less flower, less beauty. And no flower, no beauty. Right? So, yes, all different religions should be like different flowers. All different countries should be different garden. Yeah? And we are all like different flowers, my dears. We must think about this seriously. Human life is so beautiful. This earth is so beautiful. We had to learn the art of living peacefully, happily, harmoniously, friendly, loving and serving, caring and sharing with each other without hurting and harming each other. So here in big cities, you have everything. One problem, you don't have time. You have expensive watch, but no time. Come to Ladakh, we have no expensive watch, but we have time.
So we will have a lot of time to discuss now. And dear friends, this dialogue, today's dialogue, too short, but wonderful beginning. This dialogue must continue in different parts of the world. I request all the reverends here, please continue this dialogue. Dialogue is the only way for the peace. No violence, no hatred. Dialogue. Different paths. I am confident through dialogue we can overcome what some problems are being faced by our people in our country. Thank you so much. Thank you. Welcome to Himalaya. Since His Reverence Bhikkhu spoke about the peaceful harmony in Goa, let us hear one of our own Goan poets, Dilip Borkar, who is the editor of Konkani magazine BIM. He has written over 45 books and hundreds of articles and also won many state awards. I invite Mr. Dilip Borkar to come and give us his poem. Now, I am going to recite one Konkani poem. Then, after listening this poem, you have to tell me whether I am living in harmony and peace. Sorry for because this is in Konkani. कवितेचे नाव आसा खबरापत्र. सकाळी बेगीन उठून खबरापत्रांचो कोनशान कोनसो चाळप ही म्हजी हालीसराची संवयच न्हय तर व्यसन जाला. इराकाचेर बॉम्ब घालो, शेकड्यांनी निरपराध्याची हत्या, ट्रका पोंदाक कितल्याच लोकांक चिड्डिले, काश्मीरात 10 लोकांचो आतंकवादी सैनिकांमदल्या फारपेटान जीव गेले. न्हंयेत बस हुमतून 50 भुरग्यांक मरण आयले. एकामेकाचेर मोटरसायकल आपटून 4 तरणाट्यांक रस्त्याचेरूच मरण. खबरापत्राचे निमाणे पान वाचून जेन्ना हांव पेपर दवरतां तेन्ना आंकडो 1200चेर गेल्लो आसता. बलात्कार, लूट आनी खून हांची गजाल तर वेगळीच. ह्यो तर सच्च्योच गजाली नविदाद नाशिल्ल्यो. हांव निश्चिंत जावन च्याचे कप पोटांत लायता, कित्याक आजूय बी म्हाका म्हजें नांव त्या 1200 मड्यां मदीं खंयच नदरेक पडलें ना. समजली कविता? Thank you very much, Mr. Dilip Borkar. In short, he told us how he got up in the morning and got all the bad news about the killings and how we require harmony. Martin Luther King said, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." Our next speaker will be Paramjit Singh Chando. He is a member of the Governing Council of the National Foundation for Communal Harmony, which is an organ of the Ministry of Home Affairs, Government of India. The executive member of the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, Chairman of the Gurudwara Bangla Sahib, New Delhi, Chairman of Yatra Subcommittee, Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, Chairman of Guru Harkishan Public School, General Secretary of the National Sikh Organization of India, Senior Vice President of Delhi Sikh Pratinidhi Sabha. He has always stood for universal brotherhood, nationalism and patriotism from his childhood till today. And most important, his characteristic is that he is my closest neighbor. Bangla Sahib and the CBCI Center are close by, within meters from each other. Mr. Paramjit Singh Chando,
Sardarji, please give us your thoughts. मंच पर बैठे सब धर्मों के जो नुमाइंदे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता पर शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि सब धर्मों के जो नुमाइंदे आज यहाँ इस रविंद्रा हॉल में इकट्ठे हुए हैं, एक मिशन लेके कि पीस, हार्मनी और आतंकवाद का कैसे मुकाबला किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपनी सिख मर्यादा की फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व धर्म संसद का जन्म 2007 में हुआ। हम उसके फाउंडर मेंबरों में से हैं। सब धर्मों का एक गुलदस्ता हमने ये बनाया और जिसका मेन मकसद था कि अलग अलग धर्मों के नुमाइंदों को इकट्ठा करके देश में जो हालात बिगाड़ने वाली ताकतें हैं उनका खुलकर मुकाबला करना और एकता और भाईचारे का संदेश लेके जाना। हमारे गुरु नानक का भी यही मैसेज है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। गुरु नानक साहब ने कहा है, मानस की जात सब एक पहचान हो। हम लोग हैं, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु ने तो हमें इंसान बना के भेजा है। हम लोगों ने अलग अलग रूप धारण करके उसको अलग अलग धर्मों में बांट दिया है। धर्म नहीं सिखाता कि कोई आपस में बैर रखना है, धर्म तो एकता का संदेश देता है। गुरु अर्जन देव ने मानवता के लिए कुर्बानी दी, गुरु तेग बहादुर ने धर्म बचाने के लिए कुर्बानी दी, गुरु गोविंद सिंह ने अपना सर्वस्व मार दिया इस देश की खातिर, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया। तो ये सर्व धर्म संसद भी एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पर भी कोई अत्याचार हो रहा हो, चाहे वो असम में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो राजस्थान में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में है, हम हर उस जगह पर गए जहां पर भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। हमने जाके वहां पे एक इंसानियत का पैगाम दिया। चाहे वो कर्फ्यू लगा होता था, चाहे कश्मीर में बाढ़ आई, उत्तराखंड में बाढ़ आई, हमारी सिख कम्युनिटी और सर्वधर्म के संसद के सारे नुमाइंदे इकट्ठे होकर सबसे पहले वहां गए और मानवता की सेवा की। तो भाइयों, आज जो पैगाम हम यहां लेकर आए हैं, या जो पैगाम यहां से लेके जाना है, वो है आपस में मिलके बैठ के बात करनी। ये जो नक्सी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने के लिए बात करती है, अभी कल ही खबर पड़ी है उड़ीसा में 3 चर्चों पे हमला हुआ, बहुत उसकी हम निंदा करते हैं। ये एक चर्च पे या गुरुद्वारे पे या मंदिर पे या मस्जिद पे जो ये लोग करते हैं वो इंसान नहीं है, वो इंसानियत के चोले में वो धर्म को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। गुरु नानक ने, श्री राम जी ने, कृष्ण जी ने, बुद्ध धर्म ने, सबने प्रेम सिखाया है, किसी ने भी तोड़ने की बात नहीं की। तो मैं आज सर्व धर्म संसद का एक नुमाइंदा होते हुए आपसे यही कहता हूं कि जहां भी कोई ऐसा अत्याचार करने वाला आपको पता लग जाए तो उसको आप पहले तो प्यार से बताइए कि ये भाईचारे का देश है, यहाँ पे सब धर्मों का एक जैसा सत्कार है, सब धर्मों को प्यार मिलता है। गुरु नानक की बाणी जो है, गुरु ग्रंथ साहब जो है, वो एकता का प्रतीक है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक की या 5 गुरु की बाणी नहीं है, भक्तों की है, पीरों की है, फकीरों की है, संतों की है। तो एक शांतिवालता का जो रूप है, मैं उसका हवाला देते हुए आपको ये फिर बताना चाहता हूं कि गुरु नानक का मैसेज यूनिवर्सल ब्रदरहुड का था।
वही मैसेज को लेके है ये सर्वधर्म संसद अपना कार्य कर रही है और सबको लेके साथ चलती है। हमारा उद्देश्य है आओ साथ चले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you very much, Mr. Paranjit Singh Chando. We now move over to a little bit of music.
Thank you very much, students of Father Agnel School, Verna. The day power overrules the love of power, the world will know peace, said Mahatma Gandhi. We go ahead with our discussion on collective harmony with Dr. Imam Umair Ahmad Ilyasi, Chief Imam of India, President of the All India Imam Organization, which is the legitimate voice of 500,000 Imams of India. तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग मज़ाहिब के फेथ लीडर्स उसमें जुड़े हैं। भारतीय सर्वधर्म संसद का मकसद भारत में पूरे दुनिया के अंदर आपसी भाईचारा, ये एक पैगाम और यही एक मकसद के तहत इसको बनाया और आज पूरे भारत में जगह जगह हम लोग जाकर इस पर काम करते हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा कि ऑर्गेनाइजर्स को कि इतना अच्छा बड़ा सुंदर प्रोग्राम आप लोगों ने किया और इसके लिए मैं ख़ास तौर पे यहाँ के जो फादर्स हैं, जो कि यहाँ के जो हमारे आर्च बिशप ऑफ गोवा और सेक्रेटरी जनरल कैथोलिक बिशप और फादर बेंटो को नहीं भूला जा सकता इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये सूत्रधार तो वो बिल्कुल अलग है, वो छुपे रहते हैं। कोई बात नहीं, मगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, सबको एक जोड़ने का काम करना चाहिए। सबके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, सबकी इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, सबकी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद हम भारत में रहते हैं तो हम भारतीय हैं। भारत को मजबूत करो, भारतीयता को मजबूत करो, यही हमारा पैगाम है, यही इंसानियत हमारी देश की सब लोगों को मिलाकर चलने का एक मकसद है। आज जिस तरह से आपने देखा कि दंगा फसाद होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को तबाह करता है, किसी की दुकान जला जाती है, किसी के मकान जल जाते हैं, उससे पूछो कि उस पर क्या बीतती है। इंसानियत का कत्ल होता है। एक इंसान जिस तरह से दूसरे इंसान को करता है, मैं कहता हूं कि वो इंसान नहीं, वो शैतान है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। वैसे तो वो बहुत थोड़े से होते हैं, मेजॉरिटी तो बहुत अच्छे लोगों की है और थोड़े से लोग हैं जो कि फिजा को खराब करते हैं, समाज को खराब करते हैं, इंसानियत को दागदार करते हैं। हमें उन सब के लिए इकट्ठा होना है और हम सब आज यहाँ इकट्ठा होने का पैगाम सिर्फ यही है कि हम सब एक हैं। अभी जिस तरह से भारतीय सर्वधर्म संसद मुजफ्फरनगर, कैराना या किसी भी जगह हिंदू मुस्लिम या कोई भी फसाद होता है तो वहां फायर ब्रिगेड के तौर पर जाते हैं। सरकार अपना काम करती है, रैपिड एक्शन फोर्स अपना काम करती है, लेकिन ये सारे भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग फायर ब्रिगेड के रूप में जाके जो वहां पर नफरत की आग, इंसानियत की जो तबाह करने की जो आग है, उसको खत्म करने के लिए फायर ब्रिगेड के रूप में जाकर वहां पर बुझाते हैं और अमन और शांति पैदा करते हैं। यही हमारा पैगाम है। आओ हम सब मिलकर इसी तरह से आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, यही हमारा मकसद है, यही हमारा पैगाम है। क्योंकि भारतीय सर्वधर्म संसद जो कि इस समय तमाम सारे मज़ाहिब के लोगों को लेकर एक प्लेटफॉर्म के साथ, चूंकि अब हिंदू एक प्लेटफॉर्म हो, उसके लिए मैं तमाम जितने भी संत लोग इससे जुड़े हैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा। मुझे लगता है कि ये काम नहीं, इबादत है। असल इबादत यही है कि सारे धर्म के लोग मिलकर एक इंसानियत को जो बचाते हैं, प्यार मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आज यहाँ सब इकट्ठे एक साथ यही पैगाम देने का मकसद है, क्योंकि यहाँ हमारा जो धर्म है वो यही है, इंसानियत, और हमें इंसानियत पर काम करना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा, लेकिन एक नसीहत के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। चूंकि इमाम हूं, चीफ इमाम होने के नाते आपके सामने एक नसीहत करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। नसीहत दोस्तों ये है कि भारत के अंदर अब तक, ये नसीहत आपको बड़े ध्यान से सुननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने कर रहा हूं और उस पर अपनी जिंदगी में अमल करिएगा। भारत के अंदर इन 2 सालों के अंदर 70,000 डेथ हुई है एम्बुलेंस के अंदर।
चूंकि हमारे पास एम्बुलेंस को टाइम पे पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है, जाम लग जाता है और उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपसे नसीहत ये करना चाहता हूं कि इंसानियत के लिए हमें जैसे ही एम्बुलेंस चीखे, दर्द है उसके अंदर, तो सबसे पहले दोस्तों उसको रास्ता देना, और रास्ता देकर 1 मिनट ईश्वर से, अल्लाह ताला से, परमात्मा से 2 मिनट हाथ उठा के उसके लिए दुआ करना, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जो भी इस शख्स इस एम्बुलेंस में जा रहा है उसे शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं यकीन से कहता हूं कि जब आप निस्वार्थ किसी के लिए दुआ मांगेंगे, वो दुआ उसको जरूर लगेगी, उसके बदले हम सबको नेकियां मिलेंगी। हमें नेक काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Minutes given to you. Thank you very much. We have a little break with another song. We will now have a song on peace and harmony, sung by the music teachers of Father Agnel Multipurpose High School. Thank you very much for this very beautiful, harmonious singing. We have one of our main speakers for the day, Goswami Sushilji Maharaj, who is, in fact, his father, Maharishi Bhrigu Uttadishwar Goswami Sushilji Maharaj, he had started a whole Sanatan Dharma, and which he has taken over. Goswamiji created an insatiable desire for peace and love, a desire to elevate the sufferings and sorrows of human society. Inspired by Goswamiji to form the Maharishi Bhrigu Foundation in 1999 by the inspiration of the seer of Shiv Bhari Bikaner, Puja Swami Samvit Somgiriji Maharaj. Since then, it has been a long, rich, fruitful journey on the road of dialogue and social harmony. I visited his temple in Greater Noida, where he has symbols of all religions within his temple, and he celebrates every festival of every religion in the temple. Welcome, Goswami Sushilji Maharaj.
सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपस्थित महानुभाव, मंच पर विराज अतिथि आदरणीय बिशप ऑफ गोवा, respected Secretary General of Bishop Conference of India, different religious brothers, ladies and gentlemen, साहब से आज देश एक नई दिशा की ओर जा रहा है। सबका साथ सबका विकास इस देश के प्रधानमंत्री का नारा है। इस सबका पूरा भारत हृदय से स्वागत करता है, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं। परंतु बीइंग एन हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, मेरे कंधे पे दायित्व ज्यादा है, क्योंकि मैं मेजॉरिटी से संबंध रखता हूं। मैंने जो मंत्र पढ़ा वो हमारे सनातन धर्म का मंत्र है, जो मेरा धर्म कहता है कि हमको सबको साथ लेकर चलना है और मानवता के लिए जो ईश्वर ने हमको भेजा है, हम सब पहले उस परमात्मा के पुत्र और पुत्रियां हैं जिसने हमको इस संसार में भेजा है। पता लग जाए बीमारी है तो उसका इलाज उसकी दवा कर लेता है, और जब बीमारी लाइलाज हो, उसके विषय में पता ना हो, तो मामला गंभीर हो जाता है। मुझे इमाम साहब क्षमा करेंगे, क्या आप सब जो धर्मगुरु हैं मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य जो है वह यह है कि वातावरण अच्छा शुद्ध बनाए रखना। आज जो ये सभा यहां हो रही है सभागार में, फादर एग्नल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और हमारी सर्वधर्म संसद की ओर से ये एक ऐसा एम्बेसडर के रूप में अपने समाज में, अपने अपनी गली और मोहल्लों में एकता, अखंडता का पैगाम देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आज की कॉन्फ्रेंस का कोई बड़ा लाभ हमको नहीं होगा। मैं अंत में अधिक न कहता हूं कि समय का बहुत बंधन है। मैंने कुछ बातें स्पष्ट की हैं, कोई भी उसको अदरवाइज न ले। मेरी पीड़ा है भारत के लिए। हमारा भारत का धर्म सबसे बड़ा है। मेरे धर्म, हिंदू धर्म से पहले मेरा भारत का धर्म है, जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। कोई भारत माता की जय कहता है, कोई मादरे वतन की जय कहता है, कोई मदरलैंड की जय कहता है। सबका मीनिंग एक ही है, सब भारत के पुत्र पुत्री हैं, भारत उनकी माँ। मगर किसी को जबरदस्ती ये कहा जाए कि तुम जरूर बोलो कि भारत माता की जय है, तो मैं सोचता हूं ऐसा ना होकर, अगर वो मदरलैंड कहता है तो वो भारत माता की जय कहता है, अगर मादरे वतन कहता है तो भी इस मिट्टी को सलाम करता है। मेरे इमाम साहब ने अभी हरियाणा में बहुत बड़ा एक ऐसा, किसी इमाम को किसी ने थप्पड़ मार के बोला कि जरूर बोलो भारत माता की जय, तो वहाँ न्यूसेंस क्रिएट हो गया, वहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। इमाम साहब ने फैसला किया और एक बहुत बड़ी सभा, जितने भी इमाम थे हरियाणा के, उन सबको इकट्ठा किया और कहा कि ये जो छोटी मोटी हरकत करने वाले हैं, ये भारत का असली स्वरूप नहीं है। हर कम्युनिटी में कुछ लोग अच्छे और बुरे होते, मगर हमें जानते हुए उसी वक्त उसको दबा लेना चाहिए।
मुझे खुशी हुई कि उस प्रोग्राम में मैं भी गया था। आज हरियाणा बिल्कुल शांत है, हरियाणा में कुछ नहीं। वाघा बॉर्डर में हम गए, हमारे आदरणीय चंडूक जी, हमारे हाथ में भारत का झंडा था और हमने पाकिस्तान के अवाम को भी कहा शांति और अमन के साथ आओ डायलॉग करें। ये जंग जो है हथियारों की, ये इससे कभी आज तक कोई फैसला नहीं हुआ, आगे भी नहीं होना है। अगर ऐसा होना होता तो 2-2, 3-3, 4-4 हम जंग लड़ चुके हैं, कोई हल नहीं निकला। हल निकलेगा, टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अपने मनों की कटुता को अलग करेंगे। हम डीएनए एक रखते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, आसपास हो, वो सब एक भारत की कल्चर है, भारतीय संस्कृति है। मैं आपसे अंत में एक वादा लेना चाहता हूँ, अगर आप मेरे से एग्री हैं, जो मैंने आपसे कहा है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप एक ऐसा व्रत लेके जाएं अपने गली में, मोहल्ले में, परिवार में, कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आप काम करेंगे, ये सबको मैसेज देंगे और जहां भी गलत काम करने वाले लोग हैं उनका मुकाबला करेंगे, दृढ़ता से मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं। अगर आप मेरे इस प्रस्ताव से सहमत हैं तो दोनों हाथ खड़े करके मेरा समर्थन करिए। ओपन योर हैंड्स। आप मेरे साथ एग्री हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अंत में मैं सब ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद करते हुए, हमने एक प्रस्ताव लिखा है जो अभी हम मीडिया को भी देंगे, आपके सम्मुख पढ़ के हम उसको देना चाहते हैं। आई रिक्वेस्ट भिक्षु संघ से टू रीड दिस। रिस्पेक्टेड आप बिशप साहब पहले अपना पैगाम देंगे आपको, और उसके बाद हम जो ये है हमारे भिक्षु संघ सेना उसको पढ़कर आपको बताएंगे। We will now have the address by our chief guest, His Grace Most Reverend Philip Neri Ferra. I request His Grace to kindly address the gathering. Most Reverend Bishop Theodore Mascarenhas, Secretary General of the CBCI and the moderator of today's panel, distinguished speakers and panelists of the day, Fathers Sebastião Mascarenhas and Alric Carvalho, my dear fathers, sisters, brothers, seminarians, ladies and gentlemen, especially young men and women, future of our nation. I am extremely happy to be here this evening and to be part of this such a beautiful and enriching program. I thank the Catholic Bishops' Conference of India and the Agnel region of the Society of Pilar for inviting me to this meeting. My sincere thanks also to the speakers from different faiths and sections of our society. They gave a truly enriching contribution to this event and to the cause of dialogue and social harmony. As I listened to the various speakers, Mahatma Gandhi's description of the 7 deadly social sins came to my mind. The father of the nation named these as the 7 deadly sins: wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, or rather business without ethics, science without humanity, religion without sacrifice, and politics without principle. I thank the speakers for the passion and love for the country with which they delivered their speeches. Indeed, they have highlighted that our beloved country is built on diversity, tolerance, and communal harmony, and that the only way it can continue to exist and progress
is not simply by maintaining these time-tested values, but in fact by proactively fostering and strengthening these attitudes among the people of India across the divides of religion, creed, region or language. We must admit that the deadly social sins mentioned by the great Mahatma are to be found in countries all over the world, and quite pronouncedly in our own beloved India. There are many social problems existing in our society which stand as stumbling blocks in the way to development. Poverty, unemployment, pollution, regionalism, illiteracy, criminality, violence against women, drug traffic, child marriage, corruption, and various other challenges that are posing a threat to the nation's development and unity. But above all these social menaces, the rising communal violence in India is emerging to be the most dangerous of all social distrusts. Mahatma Gandhi realized the damage which communalism could cause and attended to the problem with the seriousness it demanded. He regarded the abolition of communal disharmony and the ensuing Hindu-Muslim unity as the essential prerequisite for the Swaraj. Right from his early public life, Gandhi kept alive the idea of communal unity. He lived in South Africa for 20 years in the midst of Muslims who treated him as a member of the family. Realizing the lack of unity between Hindus and Muslims in South Africa, he said, I quote, I had realized early enough in South Africa that there was no genuine friendship between the Hindus and the Muslims. I never missed a single opportunity to remove the obstacles in the way of unity, unquote. Our dear Pope Francis has placed culture in a very beautiful light. He says, a culture is strengthened by its openness and its exchange of views with other cultures.